Hi there, welcome back to our YouTube channel Secular Nomads, and you are watching Daman series. This video is second in line, and if you haven't watched the first video, then I first request you to go and watch that, the link to which is pasted in the description of this video. In the first video, we started a new journey and shared our experience with you of going to Daman from Pune, but we left it somewhere on an incomplete note from where we are going to pick it up in this video itself. The last video, we finished it while we reached Vapi. Vapi is a station, then also you have to change a couple of trains. First train, if you want to reach from Pune, Dadar West, and then you reach Vapi, and from Vapi you have to take some other mode of transport that we are going to show in this video. It has to be changed from. Please watch this video till the end to know how to reach Daman from Pune, and the excitement will begin in from there only. Hope you like this video, and if you are new to the channel, then I request you to please hit that bell icon, like this video, share it with your loved ones, and subscribe to our channel. Hope you like this video. So welcome to Vapi. This is Gujarat. You can see Gujarati written over there. Gujarati. Ah. A light here for Daman and दिवाली का हो रहा है ना करण, इसलिए भी हो रहा है. हाँ, लाइट लगा रहे हैं. And it's written Jai Hind over there. Just take a look at this bridge. Yes, so the first thing that we are doing here is just assessing it for the first time, because neither of us, maybe she has been to Gujarat in some other place in Gujarat. This is my first time I have ever stepped into Gujarat. Finance. GST. We have bypassed so many places today just to reach a union territory. So technically we are in Gujarat and we are going to be transferred to a union territory now, that is Daman. Just for you people, an interesting union territory of India that has an interesting historical timeline also that she is going to ecstatically share with you each and everything. So stay tuned to it. So this road that you can see is Daman Vapi road that takes you from Vapi to Daman. So just now we have come across a board that stated that Gujarat limit ended there. Alright, so an interesting experience we have already started having. Maybe this is how Daman greets you sometimes with surprises, right? Yes. So we ordered food at our room only over here, because we thought that maybe that will save our time and energy also of going outside. Okay, we will come to more surprises while we are talking about the previous ones that have been revealed before us. और वो है पूरी वाइट. ये वाइट आ गया, अब आ गया. वो आ गया malaikofta. देखिए दीक्षा खोल दे यार उसको. मिल्की बार के साथ रोटी खाएंगे आज. भाई अभी खाली पानी की बोतल रखे गया है ये. हाँ, जो हम बता रहे हैं that's only on a lighter note, and this restaurant that we have ordered from is not hotel's restaurant. It is their adjacent restaurant, so they give you that service also. So ये आ गया हमारा खाना. ये है तंदूरी रोटी, ये है हमारा बूंदी का रायता. ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, घर जैसा लग रहा है. ये है मेथी के पराठे. भाई आलू के पराठे, मेथी के पराठे हैं. अब आपको लेकर चलते हैं बीच पर. ओके, कौन से बीच पर? यहाँ पे कौन से बीच पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक सेकंड. उसका नाम नहीं पता मुझे. क्या कर रहे हो? ये मैकेनिज्म बताने वाला था. हाँ हुई थी. तो कार्ड से होती है. अब हो गई. ये एक बटन नजर आ रहा है आपको इसमें? ये बीच का रास्ता यहीं से है सामने. Wow, there is this thought of the day also. We travel to learn to catch some inspiration from heights above our own. Okay, तो हम step out कर रहे हैं सबसे पहले दमन में. So we are just a few meters away from the sea, and I can smell the sea. Diksha, can you? Yes, definitely. There's a different smell to the sea that we can relate to also, because this is the third time I am coming to Arabian Sea.
and it smells the same, even fresher. Before starting for the sea, we just checked the sunset time, right? So it's going to be a sunset now in another 15-20 minutes. It's very nice place. Though we have just started exploring it, but we have only got positives to share so far. So why not just make a bunch of them and present them to you as a bouquet of great experiences. Yes. 1 fish, 2 fish, and this is the shellfish. And it smells fish. It smells fish. Rhyming. ये देखिए यहाँ पर, ये है हमारी Seaface Road. आप देख पा रहे हैं, पानी पीछे जा चुका है, मे बी लो टाइड आई होगी, पानी इतना पीछे चला गया है. यहाँ पे ही इज स्टैंडिंग एंड अ लवली थिंग अबाउट दमन हियर इज कि दिस इज़ अ Seaface Road जो अभी अभी बनी है. आप ये लंबी देख रहे हैं, ये आगे तक जा रही है एंड आई थिंक रात को करेंगे ये पूरी लिट अप हो जाएगी एंड आई थिंक दिवाली पे दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. While just looking at the water and deciding whether we can go inside or not, I have spotted a lighthouse on my left hand side that you can see behind me. Yeah, this is the lighthouse. And Diksha has already done her homework behind it, so we are planning to go to the lighthouse. Let's see if it's possible right now or maybe later. But this is the first lighthouse that we can try to go inside and see how it looks from above. And as we are in Daman, that's almost near to Gujarat, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? ऊँट, camel. Maharashtra के बीचेस पे ऊँट नहीं थे. ऊँट नहीं थे. And one more thing that I observed last thing is that water sports at around 6 o'clock around the sunset time is not active here. But we'll be exploring many other parts of the beach and coastline of Daman. So and we'll keep updating which is the best one for you if you are looking forward to having some water sport adventure over here. So stay tuned to the video and enjoy it with us. ये जो यहाँ की सैंड है वो ब्लैक सैंड है. पहले हम गणपति फूले गए थे तो वहाँ पे थी वाइट सैंड. गोवा में या और बहुत जगह आपको ब्राउन कलर की या क्रीम कलर की सैंड मिलेगी. वरीड अबाउट कि तुम्हारे पाँव गंदे हो जाएंगे. पहले हम पाँव गंदे करे हुए इतना टाइम हो गया कि अब नाउ वी आर बैक हियर टू अगेन फील दैट वेटनेस इन आवर फीट. ये सी का पानी यहाँ तक आता होगा हाई टाइड में. ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, उधर से हो जाएगा करण. बहुत दूर है. तो ये देखिए, ये दिवाली का टाइम है और किसी ने यहाँ पे दिए लगाए हैं एंड स्ट्रेंज थिंग इज कि ये बुझ भी नहीं रहे हैं. ये पानी ना क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बाहर नहीं जा पाएंगे. वहाँ से सन नहीं ठीक है करण, इतना सही पानी है. तुझे इस पानी से डर लग रहा था. क्रॉस करो अभी से. तो हमें सी तक जाना है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं. करण I'll fall. You left me over here. But that was good. Let's go there quickly. Oh yeah. Oh, the sun has also gone यार. No. कैसे जा रहा है सन? एकदम धीरे धीरे से. आपको दिखाऊं कैसे जा रहा है. यहाँ पे है सन कहीं. ये रहा. बिल्कुल नीचे जा रहा है. तो अब हम एक्चुअली काफ़ी आगे तक आ गए हैं इसमें. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल पानी है क्योंकि लो टाइड में पानी पीछे चला गया था. तो अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं. आइसक्रीम की शॉप है. ओके, हेलो एवरीवन. हम होटल में वापस आ चुके हैं. अच्छा ठीक है, सॉरी. तो यहाँ पे होटल में हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि हम आज बहुत थक गए थे. हम बीच पे होके आ गए थे. यहाँ पे हमने अभी सैंडविच ऑर्डर किया और बहुत अच्छी सी चाय मिल रही है. Quality of tea is really fine. When you go to a place where it's in a coastal area, you risk the chance of being served a tea with salty water. मतलब ऐसा नहीं obviously कि अपना पानी समुद्र से लेके आते हैं, ऐसा नहीं है. But still there could be leaching of salt sometimes in water, normal mineral water also. But the taste of tea is not tempered by its proximity to the sea. फिर हम आपके लिए प्लान करने वाले हैं कि आपको यहाँ की कौन कौन सी जगहें दिखाएं. 2 दिन है हमारे पास, कल और मंडे जब दिवाली है, और ट्यूसडे फिर हमें वापस वैसे ही जाना होगा यहाँ से बॉम्बे और बॉम्बे से पूना. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे जल्दी प्लान करते हैं करण, राइट? लेट्स मूव अहेड.
Hope you liked this video, and in the next video we'll take you on a journey to exploring one of the two important fort structures in the Union Territory of Daman, that is Nani Daman Fort, and how is it still standing as a symbolic presence of the cultural and administrative practices of the commune that used to occupy this place before it fell under the ambit of independent India's governance. Till we bring that vlog to you, you can enjoy other vlog series also on our YouTube channel of Secular Nomads, and have a nice day.